Assalamu alaikum dear students. After the chapter we are going towards the summary and question answer of the chapter. So let's give it a read. The story His First Flight by Liam O'Flaherty is about a young seagull that is afraid to fly. All his younger siblings, despite their much shorter wings, flew fearlessly while he could not gather the courage to trust his own wings. सिबलिंग बहन भाई को कहते हैं, तो उसके जो छोटे बहन भाई थे उनके विंग्स जो थे उनके पर से ज़्यादा छोटे थे, लेकिन फिर भी वो उड़ गए। लेकिन ये अपना हौसला इकट्ठा ना कर सका और इसके अलावा ख़ुद पे इसको एतमाद ना था अपने परों पे कि वो उड़ सकेगा। His parents scolded and taunt him for not even trying, और इसके वालिदैन जो है वो भी इसकी डांट टपट कर रहे होते हैं कि आप ट्राई भी नहीं कर रहे हैं। They even threat him to leave him alone and hungry if he doesn't move, और अगर वो हरकत नहीं करता तो उसको ये भी धमकी दी कि वो उसको अकेला छोड़ देंगे भूखा प्यासा। The following day he is left in isolation, उस दिन उसे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है and hungry, और भूखा भी। The young seagull cries out of starvation, hoping his mother would help. On seeing his mother come to him with the fish, he gets excited. अगले ही दिन उसको बिल्कुल अकेला भूखा प्यासा छोड़ दिया जाता है और उसकी मदर जो उसको नोट कर रही होती है वो फिश का एक पीस लेकर उसकी तरफ उड़ती है, जिससे वो बहुत एक्साइटेड और खुश हो जाता है। लेकिन उसकी मदर बीच रास्ते में ही रुक जाती है और खुराक का नज़ारा जो है वो उसे पागल कर देता है। He gets maddened out of hunger and takes a dive at the fish, forgetting for a moment that he is afraid to fly. तो वो एक लम्हे के लिए भूल जाता है कि उसे डर लग रहा था फ्लाई से, और वो जंप करता है उस खाने पे। Finally he took his first flight. All the family members celebrate his victory by cheering around him. तमाम फैमिली मेम्बर जो हैं वो खुश होकर उसके साथ उड़ने लगते हैं। Thus he overcomes his fear. वो अपने खौफ पे काबू पा लेता है। In the same way, we should also try to surmount means to control or to solve our problems with the help of our strong will and determination. Determination mean also the same strong will. क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। Why did the young seagull have to join the company of his family? So flight is essential for birds and it is the matter of life and death for them. They fly in the air to search their food. If they do not fly in the air, their life is in danger. उड़ना जो है वो बर्ड्स के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला होता है, क्योंकि अगर वो उड़ नहीं सकते तो फिर इसका मतलब है वो अपने फूड तलाश नहीं कर सकते और ख़ुद को सिक्योर और महफूज भी नहीं कर सकते। They can easily be caught by bird catcher. कोई बर्ड कैच करने वाला जो है उसको पकड़ सकता है। They can easily be hunted by fall hunters. Moreover, they can fall or victim to cats, dogs and other carnivores, या किसी भी गोश्तखोर जानवर के शिकार बन सकते हैं। The young seagull was also in the same situation. He was alone on his ledge and he was unable to make flight and search food for himself. Therefore, it was necessary for him. ये बहुत ज़रूरी था उसके लिए कि वो जो है अपने फैमिली के पास जाए and to make himself perfect in the art of flight in order to save his life. और उड़ने का जो फ़न है वो कंप्लीट सीख ले ताकि वो अपनी जान बचा सके। Question number 2 is, why don't his parents, his brothers and sister give him food? The parents, brothers and sisters of the young seagull do not give him food because they want to make him independent. मतलब वो अपना काम खुद करे। They compel the young seagull, वो उसे मजबूर करते हैं to fly in the air because that they want to force him to search his own food for himself. As a matter of fact, his wings are as strong as of his brothers and sister, but he lacks courage. सिर्फ उसमें हिम्मत की कमी है। His family wants to remove his fear because it was necessary for his survival. उसके ज़िंदा रहने के लिए ये ज़रूरी था। His parents, his brother and sister, that is why do not give him food as a punishment for his cowardice. उसकी बुज़दिली की वजह से उसे सज़ा के तौर पर उसको फूड नहीं देते। This was very necessary for his coming life. Question number 3 is that what was the attitude of the family towards the young seagull and was it agreeable to you or not? तो यंग सीगल की फैमिली का एटीट्यूड उसके साथ मुनासिब था या नहीं? So the answer is that flight for birds holds great importance as their whole life depends upon flying. The parents of the young seagull, his brother and sister, do not give him food as a punishment. Apparently it seems that his family is very cruel towards him. तो ज़ाहिरी तौर पे तो हमें ऐसा लगता है कि उसकी फैमिली उसके साथ बहुत बुरा कर रही है। But this treatment is apt, मगर ये बहुत मुनासिब और मौजू जो है वो सलूक था for his coming life, क्योंकि उसके आगे आने वाली लाइफ के लिए ये बहुत अच्छा था। His parents, his brother and sister do not give him food because they want to force him to make flight himself
and search food for his survival. Moreover, it makes him secure and stronger, as we see at the end that he enjoyed his flight and the company of his family. Therefore, the attitude of his family was absolutely agreeable towards him. तो उसकी फैमिली वालों को जो सलूक था वो बिल्कुल प्रैक्टिकल था, बहुत मुनासिब था उसकी तरफ. Question number 4 is that describe in your own words the feeling, actions and thoughts of young seagull soon after his fall. तो गिरने के बाद यंग सीगल जो है वो क्या महसूस करता है. When the young seagull jumps in the air, he falls with a loud scream. He closes his eyes. A great terror grabs him and his heart stands still. तो बहुत सारा खौफ उसे जकड़ लेता है और वह अपने आंखें बंद कर लेता है और उसका दिल ऐसा लगता है जैसे रुक गया हो. बट दिस सिचुएशन लास्ट्स फॉर अ मोमेंट एंड सून ही फॉरगेट्स हिज डिसअपॉइंटमेंट. मगर ये सिचुएशन बहुत थोड़ी देर के लिए रहती है और वो उसे भूल जाता है कि वो उड़ नहीं सकता. इन द बिगिनिंग ही फील्स अ बिट डिजी एंड गिडी. शुरू में उसे अपना सर थोड़ा चकराता हुआ महसूस होता है. बट सून ओवरकम्स दिस डिफ़िकल्टी. लेकिन जल्द ही वो इस पे काबू पा लेता है. ही फील्स नो फियर आफ्टरवर्ड्स. ही फील एक्साइटेड एंड जॉयस फ्लाइंग अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड इन एवरी डायरेक्शन इन द एयर. ही फॉरगेट्स हिज फोबिया. फोबिया मीन डर को कहते हैं. और फ्लाइंग एंड रिकवर्स हिमसेल्फ. Question number 5 is what could be the author's purpose behind writing story of his first flight. तो author का मकसद क्या है इस story को लिखने का. So the lesson his first flight is full of moral lessons for us. There are always problems before starting a new work. बट वी शुड नॉट लूज़ हर्ट. हमें हौसला नहीं हारना चाहिए. और तो इस स्टोरी में हमारे लिए बहुत सारे लेसन्स हैं. वी शुड फेस द प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज़. वी विल बी एबल टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स सून. इन द स्टोरी द यंग सीगल इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग. ही लेक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस. उसमें खुद एतमादी की कमी है. हिज मदर हेल्प्स हिम इन रिस्टोरिंग हिज कॉन्फिडेंस. ही फ्लाइज इन टू द एयर एंड फॉरगेट्स हिज डिसअपॉइंटमेंट. We should also try to surmount our fears and never give up. तो हमें भी चाहिए कि हम अपने खौफ पे काबू पाएँ और कभी भी हिम्मत ना हारें. The purpose of the author is to motivate and encourage us and stay determined against hardship. तो राइटर जो है वो हमारी हिम्मत बढ़ाता है ताकि हम मुश्किल सिचुएशन में जो है अपना हौसला और हिम्मत ना हारें. Question number 6 is compare and contrast the attitude of the family members before and after the flight of the young seagull in his first flight. उसकी फैमिली का रिस्पॉन्स क्या होता है, पहले क्या होता है और बाद में उसके उड़ने के बाद. सो द पेरेंट्स ऑफ द यंग सीगल, हिज ब्रदर एंड सिस्टर, डू नॉट गिव हिम फूड एज अ पनिशमेंट. हिज फैमिली वॉज बिहेविंग रूथलेसली. उसके साथ जुल्म से पेश आती है. ऑल ऑफ देम वर रिप्रोकिंग हिम एंड टॉन्टिंग हिम. उसको तमाम डांट डपट कर रहे होते हैं उसकी. दे वॉन्ट हिम टू कम आउट ऑफ द लेज एंड फेस द चैलेंज. Even they were not sharing their food with him, but after he made his first flight, all of them started loving and praising him. तो उड़ने के बाद जो है साहब उसको दोबारा से प्यार करने लगते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं. They shared their food with him and joined him in his first flight. Identify the sentence in first paragraph of his first flight which shows cause and effect. तो कॉज एंड इफ़ेक्ट वो चीज़ होती है कि जिसका कोई कॉज होता है और उसके नतीजे में कोई स्टोरी जब आप लिखते हैं तो किसी चीज़ के नतीजे में कोई दूसरी चीज़ जो है वो वाक़ होती है. जैसे यहाँ पे देखिए ग्रीन में लिखा है ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग वुड नेवर सपोर्ट हिम. उसे ये पता था कि उसके विंग्स जो हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो काफ़ी वीक हैं. सो ही बेंट हिज हेड. तो इसका नतीजा ये हुआ, इसका इफ़ेक्ट ये हुआ. ये कॉज था पहले जो ग्रीन में लिखा और इफ़ेक्ट ये था कि वो वापस उसने बेंड किया अपने हेड को और वापस वो उसकी होल में चला गया जहाँ उसने रात गुजारी थी. Question number 8 is that read any paragraph from the text to identify the main idea and the sentences that support a main idea. So जो आपको लगता है कि मेन आइडिया किस जुमले से आपको पता चलता है कि इस चैप्टर का मेन आइडिया क्या होगा. तो देखिए शुरू के पैराग्राफ में हमें इन अल्फाज से पता चलता है. इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ इट इज़ सेड द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम. इसी जुमले से हमें पता चलता है कि एक यंग सीगल है वो अलोन है और उसने उड़ना था अपनी फैमिली के साथ लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा. लाइक उसको कोई खौफ है. इससे हमें मेन आइडिया का पता चलता है और थोड़ा सा स्टोरी को भी पता चलता है कि आगे उसने जाके अपने फियर को ओवरकम कैसे करना है, कंट्रोल उसको कैसे करना है या उसने उड़ना कैसे है. ठीक है, तो रेस्ट ऑफ दी सेंटेंसेस सपोर्ट दिस सिचुएशन. जैसे आप देखें
that his brother and sister had already flown away. He felt certain that his wing would never support him. He failed to muster up courage to take that plunge. ठीक है, अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, उसके बहन भाई उसको छोड़ गए. ये सारे जुमले इसी मेन जुमले को जो है, एक ही जुमले को सपोर्ट कर रहे हैं. एंड पे ये एक लाइन है जी, हिज पेरेंट्स आर अपब्रेडिंग हिम. अपब्रेडिंग मीन स्कॉल्डिंग हिम, रिब्यूकिंग हिम, टॉन्टिंग हिम, उसको डांट डपट कर रहे होते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 इज दैट रीड द सेकंड पैराग्राफ ऑफ द टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई ट्रांजिशनल डिवाइसेस एंड स्टेट देयर फंक्शन. ट्रांजिशनल डिवाइसेस वो होते हैं जो किसी दो सेंटेंसेस को मिलाते हैं या आइडियाज़ को मिलाते हैं. ठीक है, जैसे सिंस, देन, मोर ओवर, देयरफॉर, ये सारे ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं. अब सेकंड पैराग्राफ में आप देखें, ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर वर्ड्स दैट हेल्प कैरी अ थॉट फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस और फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर. सो इन दी सेकंड पैराग्राफ सम वर्ड्स लाइक सिंस, then and in fact have been used as a transitional device. अगर आप सेकेंड पैराग्राफ में देखें तो आपको ये वर्ड्स मिलेंगे और पहली थॉट को दूसरी थॉट के साथ कनेक्ट किया गया है इन ट्रांजिशनल डिवाइसेस के ज़रिए. आते हैं स्टूडेंट्स अपने एक्सरसाइज की तरफ, ग्रामर की साइड पे. So after question answer and summary, we come towards the exercise. You find on page number 19 the exercise that you have to find out the pronunciation in the dictionary and then later on use these words in sentences. So the first one is gnaw, G is silent. It means chewing again and again, किसी चीज़ को बार बार चबाना. So इसका जुमला हो सकता है the dog gnawed the bone. Monstrous means monster से निकला है, mean बहुत बड़ा, बहुत huge, very big. So sentence could be the monstrous terror seized the seagull. Yeah, the monstrous shadow terrified me. Third one is derisively, which means scornfully, hatefully. So the young seagull replied his mother derisively. Next one is plateau, a plain area which is higher than the surface of earth. सतह मुर्तफा जिसको हम कहते हैं. So the young seagull's family was lying on the plateau. And the last word is devour. Devour means to swallow something, किसी चीज़ को निगल लेना. So he devoured all the meat in his plate. यानी वो अपनी प्लेट में पड़ा हुआ तमाम गोश्त जो है वो निगल गया. Exercise B is write the words related to the cooking in front of their meaning. तो आगे जो fill in the blanks है उसमें आपने cooking से related जो words हैं वो fill करने हैं. So mark with knife without cutting. कभी कभी आप गोश्त में जो है वो इस तरह से कट लगाते हैं और इसको कहते हैं score. टेक स्किन ऑफ फ्रूट वेजिटेबल, जब छिलका उतारते हैं आप फ्रूट का या वेजिटेबल का, इसको आप कहते हैं पील. नंबर 3 इज कटिंग इनटू क्यूब्स इज डाइस. शेक पाउडर थ्रू अ फाइन मैश नेट, इसको सीव बोलते हैं. जब आप आटे को छानने के लिए छाननी जो इस्तेमाल करते हैं, दिस इज कॉल्ड सीव. नीड, जिसे आटे को आप गूंथते हैं हाथों से, दिस इज कॉल्ड नीड. कुक इन हॉट वाटर, दिस इज बॉयल. टर्न हीट डाउन टू हील स्लोली, दिस इज सिमर. यूज इम्प्लीमेंट टू कट फूड इनटू श्रेड्स. किसी भी फ्रूट वेजिटेबल को जब बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में आप काटते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रेट. चीज़ या गाजर का हलवा बनाते हुए उसको भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं टूल की मदद से, दिस इज़ कॉल्ड ग्रेट. कुक यूजिंग हॉट ऑयल इन अ पैन, सो दिस इज़ कॉल्ड फ्राई. जब आपको कोई चीज़ फ्राई करनी हो. कट वेरी रफली. चॉप, जैसे प्याज को आप चॉप करते हैं तो रफली कट्स लगाते हैं, कोई मखसूस तरीके से या डिज़ाइन से नहीं लगाते. स्टिर इंग्रेडिएंट्स टुगेदर, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को, बहुत सारी अज्जा को आप जब मिलाते हैं चम्मच की मदद से, दिस इज़ कॉल्ड मिक्सअप करना उसको. कट इनटू थिन स्लाइसेस लाइक पेपर, दिस इज़ कॉल्ड स्लाइस, जैसे आप आलू के स्लाइसेस बनाते हैं. कुक इन ओवन विदाउट ऑयल. विदाउट ऑयल अगर आप जैसे केक बनाते हैं को बेकिंग कहा जाता है, बेक करते हैं आप. कुक इन ओवन विद ऑयल जो होता है वो रोस्ट होता है. अब पिछली एक्सरसाइज में भी स्टूडेंट्स हमने कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ा. अब यहाँ पे वापस जो है वो कलेक्टिव नाउन है, आपने सूटेबल कलेक्टिव नाउन जो है वो इसके आगे लगाना है, ग्रुप के आगे. मैनी इंसेक्ट्स जो होते हैं वो स्वार्म्स होते हैं. पीपल जो होता है वो कॉन्ग्रीगेशन, हजूम को कहते हैं. मैनी फिश जो है वो शोल कहलाते हैं. मैनी शिप्स फ्लीट. मैनी पेपर्स के लिए आप बंडल यूज़ करते हैं. मैनी रूम्स के लिए स्वीट का लफ्ज़ होता है. मैनी कार्ड्स के लिए आप डेक. एंड मैनी नाइफ्स का सेट होता है. पेज नंबर 21 पे हम आते हैं और यहाँ पे हमने बी में हमारे पास क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट वर्ब. माइंड द नाउन मीन्स पे अटेंशन टू द नाउन. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हियर आर द न्यूज़ और इज़ द न्यूज़. सो हियर इज़ द न्यूज़.
न्यूज़ जो है वो कलेक्टिव नाउन है। फिर आगे आता है वेयर आर माई शूज़। शूज़ चूँकि पेयर में होते हैं, आप उसके लिए हमेशा प्लूरल जो है वर्ब यूज़ करते हैं। नंबर 3 इज़ फर्दर इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल इन दी ऑफिस। नंबर 4 इज़ द स्टेयर्स आर ओवर देयर। स्टेयर्स चूँकि ज़्यादा होती हैं तो ओवर देयर। द फर्नीचर इन आर क्लासरूम इज़ अनकम्फर्टेबल। फर्नीचर जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है। पाकिस्तान इज़ अ वेरी नाइस कंट्री। योर सन ग्लासेस आर ऑन द टेबल। जैसे मैंने कहा कि सन ग्लासेस जो है वो पेयर में होती हैं। होमवर्क इज़ बोरिंग। Look at number 9. The scissors on the table are mine. Scissors again पेयर में होते हैं। Physics is not easy. Subjects जो हैं वो हमेशा singular count होते हैं, so physics is not easy. नंबर सी में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इस वर्ड्स को देखना है। ये सिंगुलर हैं और उनके प्लूरल, दोनों सिंगुलर प्लूरल के आपने फिर सेंटेंसेस बनाने हैं। ऑक्स बेल को कहते हैं, ही इज़ स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। एन ऑक्सन प्लूरल है, सो द लैंड वॉज प्लोड बाय ऑक्सन। रूफ एक छत को, सो द रेन इज़ पोरिंग ऑन द रूफ। रूफ्स बहुत ज़्यादा, तो द रूफ्स ऑफ द हाउसेस वर बिल्ट विद स्ट्रॉस। पोटैटो सिंगल, शी मेड पोटैटो सैलड। एंड पोटैटोज प्लूरल में, आई लाइक रोस्टेड पोटैटो। पार्टी, I attended my farewell party. And parties, I like going to parties. Deer, I saw deer in the forest. हिरन को कहते हैं deers बहुत सारे, तो there were many deers in the zoo. Chief कैप्टन को कहते हैं, so chief of army staff visited the soldier. Chiefs बहुत सारे chiefs, so all the chiefs attended the meeting. फ़ोटो सिंगल होता है, शी लाइक्स टू टेक फ़ोटो। फ़ोटोज़ बहुत सारे, 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आर रिक्वायर्ड। सीरीज़ रिमेन्स सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब सिंगुलर के सेंस में भी यूज़ होता है और प्लूरल के सेंस में भी। आई वॉच द ड्रामा सीरीज़। वाइफ सिंगुलर, सो असलम्स वाइफ इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड वुमेन। वाइफ्स बहुत सारी, द वाइफ्स ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर रोल मॉडल फॉर अस। Family, joint family system is better. Families, there are so many families living over there. Boy, he's a good boy. And boys are playing hockey. House, my house is not very near to the college. City, Lahore is a big city. So cities are crowded with traffic. Man, he's a very generous man. Men जो है वो बहुत ज़्यादा प्लूरल को कहते हैं. So many men and women died in the accident. Child singular, the women gave birth to a child. And children, the children were very naughty. Sandwich, I ate a sandwich. And sandwiches, we ordered for few sandwiches. Nurse, all the nurses of the hospitals are on duty. सिंगुलर जो है वो, सो शी वर्क्स एज अ नर्स. शेल्फ, आई केप्ट द बुक इन दी शेल्फ. शेल्फ्स बहुत सारे, बुक्स वर प्लेस्ड इन दी वुडन शेल्फ्स. Now we come to exercise D on page number 21. Fill in the blanks with the correct form of the given verb in the parentheses. Think about whether the noun is singular or plural. तो नाउन के मुताबिक आपने सुटेबल वर्ब यूज़ करना है कि वेदर दिस इज सिंगुलर और प्लूरल. द पेयर ऑफ सन ग्लासेस इज़ नहीं होगा जी, आर होगा, क्योंकि सन ग्लासेस जो है वो प्लूरल कंसिडर किए जाते हैं. आर रियली एक्सपेंसिव, आई एम नॉट पेइंग दैट मच. नंबर 2 इज़ दीज सिजर्स आर होगा. Number 3, your jacket wearing is really nice, but those green jeans are horrible. Physics is the study of natural world. Number 5 में आएगा जी, the news we hear on the TV are bad. यहाँ पे न्यूज़, बहुत सारे न्यूज़ के बारे में कह रहे हैं, तो उस सेंस में यूज़ हुआ है, इसीलिए हम आर यूज़ कर रहे हैं. इट्स सो डिप्रेसिंग. नंबर 6 इज़ दैट द पुलिस इज़ इन्वेस्टिगेटिंग. इज़ इज टू बी वर्ब और इसके साथ वर्ब विद ING फॉर्म लगेगा. सो नंबर 7 इज़ पीपल आर ऑलवेज कलेक्टिव नाउन है, इसलिए हम आर यूज़ करेंगे. दिस केयरफुली बिफोर यू स्पेंड दैट अमाउंट ऑफ मनी. 1000 pound इज़ अ लॉट. आर्टिकल अ के साथ ये सिंगुलर नाउन आपको बता रहा है, दैट इज़ वाई यू यूज़ इज़ सिंगुलर वर्ब फॉर इट. Number 9 is you should try walking so far just to find an open supermarket 3 miles. Will tire you up. So you will use will. और will के साथ हम tire यानी verb की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे.
Number 10 is they have exaggerated a little with that new swimming pool. Did you see the temperature of the water? 41 degrees is too high. तो यहाँ पे आप is यूज़ कर रहे हैं क्योंकि डिग्रीज को आप नहीं देखते, आप टेम्परेचर को देखते हैं, and that is why you use singular verb. Transitional devices हमारा अगला टॉपिक है, and that is that transition words are used to link ideas within sentence and sentences within paraphrase. So used correctly, transition words make writing easier to understand and more mature. Try to identify transition words when you are reading, and when you have opportunity use these words yourself. ट्रांजिशनल डिवाइसेस के बारे में हमने पहले भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर में डिस्कस किया. अब हम उन्हीं ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये कनेक्ट करते हैं आइडियाज़ को. सो सेंटेंस नंबर 1 इज़ यू कैन यूज़ थिंग्स यू ऑलरेडी हैव अराउंड द हाउस फॉर डॉल फर्नीचर. फॉर एग्जाम्पल, अ स्पूल ऑफ थ्रेड कैन बी यूज्ड एज अ स्टूल. सो इस ब्लैंक में आएगा फॉर एग्जाम्पल. नंबर 2 इज़ आई लव पिज़्ज़ा, देयरफॉर मोस्ट डेज आई ईट इट. तो देयरफॉर इज़ ट्रांजिशनल डिवाइस. नंबर 3 में जो ट्रांजिशनल डिवाइस आएगा वो होगा द डे सीम्ड एंडलेस वाइल वी वर वर्किंग ऑन आवर प्रोजेक्ट बट फाइनली. तो फाइनली हमने उस टाइम पे द टाइम केम फॉर अस टू सेट इट असाइड फॉर द डे एंड गो होम. Number 4 sentence is that Khan is very educated. He matriculated from high school and then earned a bachelor's degree from the local college. A few years later, he earned a master's degree. Furthermore, मज़ीद आप उसमें addition कर रहे हैं. So we use transitional device of furthermore. He is about to get his PhD in physics. So number 5 is Gulmina and I look forward to being able to see each other again next summer. Until then, we will write letters to each other. So उस वक्त तक, so this transitional device has been used. Number 6 is I would really like to see you again. So will you join me one afternoon for lunch? So हम इसमें so का इस्तेमाल करेंगे number 6 में. Number 7 is में but का इस्तेमाल करेंगे. I wanted to go to the movies but the tickets were already sold out. तो यहाँ पे contrast है. सो यहाँ पे बट रीज़न बता रहा है आपको. नंबर 8 इज़ वी नीड टू गो टू द स्टोर हाउ एवर वी विल स्टॉप एट रेहान्स हाउस. सो हाउ एवर का ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ हुआ. नंबर 9 इज़ बट यूज़ होगा. देखें, डॉग्स आर नॉट अलाउड इन द मॉल बट द लेडी दैट वर्क्स इन द बुक स्टोर there brings her dog to work with her every day. Number 10 में है I studied very hard for English test but I barely passed it and my studying efforts were unrewarded. तो यहाँ पे हम transitional conjunction and का use करेंगे as a transitional device. Number B is create an original sentence or pair of sentence using the transition indicated. So meanwhile को आपने यूज़ करना है सेंटेंस में. I was waiting for the bus but meanwhile I thought to buy something. For example, you have so many ideas to score better in exam. For example, you can join some academy. Consequently means नतीजे के तौर पर finally. So she didn't work hard and consequently she failed in the exam. Without a doubt मीन जिसमें कोई शक व शुबा ना हो. ही इज़ विदाउट अ डाउट वेरी जेनरस पर्सन. देयरफॉर जिसके नतीजे में हो, तो इसका जुमला ये बन सकता है दैट आई वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड देयरफॉर आई डिसाइडेड नॉट टू गो टू वर्क. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज. इंशाल्लाह अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे हम और अगले चैप्टर के साथ. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.